बात 1943 में शुरू हुई ब्लू स्टार की। 33,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली ब्लू स्टार देश की दिग्गज एयर कंडीशनिंग, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन और एमईपी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है। ये एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर्स, एयर कूलर, कोल्ड स्टोरेज का भी काम करती है। आज के जो कंपनी हमारे रडार पर इसलिए भी है क्योंकि देश में गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे में गर्मियों के सीजन में कंपनी को किस तरह की सेल्स एक्सपेक्टेड है, अब तक के आंकड़े क्या कहते हैं, मैनेजमेंट के साथ हम विस्तार से बात करेंगे। मौजूदा डिमांड ट्रेंड कैसा है, एक्सपेंशन का रोड मैप आगे का क्या है, इन सबको भी हम समझेंगे। इन सब पर विस्तार से बात करने के लिए आइए हमारे साथ कंपनी के एमडी बी त्यागराजन सर जुड़ चुके हैं। त्यागराजन सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। तो सबसे पहले तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इस बार की गर्मी में ने, सिर्फ भारत में नहीं दुनिया भर में। तो जिस तरह की हीट वेव्स हैं इस बार, हीट वेव्स के दिन भी जो थे वो अधिक ही थे और इसका अंदाजा हमें पहले ही फोरकास्ट में लग चुका था। सर बताइए, जिस तरह का समर अब तक का रहा है, सेल्स किस प्रकार की आपको दिखी हैं और ओवरऑल अगर रूरल अर्बन एरियाज में देखा जाए तो कैसी डिमांड कूलिंग प्रोडक्ट्स की आई है? Good afternoon. It's a pleasure interacting with you. If you recollect, when the season commenced, we all felt that it should be a season where we will witness 25 to 30% growth. But March last week itself, we could sense a growth of over 40%. In the month of April, witnessed a growth of over 70% compared with the previous year. And May again has been more than 80% sale. Still, the demand continues, specifically in the northern region, driven by the heat wave. So it is an unprecedented summer season. Every one of us were caught unaware in terms of inventory planning. In April, there was a shortage of material at several pockets, but May, the industry has risen to the occasion and could manage inventories. It is good for the room air conditioner industry. For many years, it was stuck at around a 7-8% penetration rate. The anticipation was that by 2030, we will reach a penetration of over 25%. I think this summer provides that opening for us to go ahead and ramp up our industry size, production capacities, and other initiatives such as sustainability-related programs, which we have been part of and willing to implement more. सर एक बात बताइए, आपकी कंपनी ने सबसे ज्यादा कूलिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड कहाँ से आते हुए देखी है, रूरल एरिया से या अर्बन एरिया से? गिवन द फैक्ट कि अर्बन एरियाज में तो पहले से ही डिमांड रही है, क्या रूरल एरियाज में कुछ अलग से आपने डिमांड ट्रेंड इस बार देखा है इस बार की गर्मियों में? For the past 3-4 years, we have been witnessing like more than 65% of the sale is coming from tier 3, 4, 5 markets. And right now, it is close to around 70% happening in tier 3, 4, 5 markets. And it is also a fact that the consumer finance related purchases have shot up. It's close to 55% of the sale is happening through consumer finance scheme, which means it is no longer an aspirational product or a luxury product. It is necessarily required. People are willing to go ahead and buy ahead of their own plan when they would have purchased. Consumer finance is a clear indicator of that. Yeah, very big shift that has taken place. It is on the average, it used to be around 35%. In season, it would have touched 40. Now it is at around 55%. Of course, it is a cost to the companies, but that's where the industry is moving. टियर 4 शहरों में आप कह सकते हैं कि एक लग्जरी आइटम नहीं रहा है। जिस तरह की प्रचंड गर्मी पड़ी है और जिस तरह की परचेज पावर है, उसके कारण अब हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर फाइनेंस के जरिए भी एक बड़ा इंडिकेटर त्यागराजन सर ने खुद ही रिवील किया कि किस तरह की डिमांड बूस्ट यहाँ पर पिछले कुछ समय में देखने को मिली है। अच्छा सर, आपने अपने इंटरव्यू के पहले सवाल में ही इस बात का जिक्र किया
कि किस तरह की स्टॉक शॉर्टेज यहाँ पर देखने को मिली है। क्या सर अभी उसमें कुछ सुधार दिखा? आपने कहा अप्रैल के महीने में देखने को मिला था, अब हम जून में एंटर कर चुके हैं, मॉनसून का यहाँ पर आगमन हो चुका है। ऑफ कोर्स दूसरे पार्ट्स में पहुँचते-पहुँचते समय लगेगा, तब तक तो अभी भीषण गर्मी झेलनी पड़ेगी। मुझे सर बताइए कि अभी डीलर स्टॉक हमने चैनल चेक किया, वो आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स के पास कंपोनेंट्स की दिक्कत है। आपका क्या टेक है सर इस समय एज़ ऑफ नाउ? It's far better than what it was in April. No industry would have planned for a 70-80% growth, right? So therefore, it is very well understandable. But the most important thing is the customer experience, where ideally the same day installation or the next day installation, but it is taking 2 more days because you do not have the ecosystem of so many technicians who can go ahead and install. It's not a plug and play product. You have to install it in a proper manner. So we regret that quite a few customers have to wait for 1 more day. And right now, I don't think there will be an issue because the demand will taper off. But again, when you are talking about June, you are comparing with what the June last year was. Last year, June was a very bad June because it was raining extensively. In fact, April, May, June put together there was not any growth over the previous year to last year. Now, it is an unprecedented, it's an orbit shifting kind of situation that has been created, and it is good for the industry. At the end of the day, the scale will also help us to maintain the prices. It gives us some advantage. That's a good sign. राइट। अच्छा सर, वैसे तो आपने कहा कि अब डिमांड टेपर ऑफ करेगी, लेकिन अगर आप बता सकें इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री लेवल्स एसी एयर कूलर्स में अभी आपकी स्थिति क्या है सर? It is good. We will be able to deliver any material. In about a week's time, we will be able to also install faster. And the commodity prices are shooting up. You're aware of that. The copper has gone up significantly, and so the industry will play its own role of looking at alternate materials as well. Like we are seriously working towards bringing aluminum microchannels as a heat exchanger, like automobile industry did. इनफैक्ट सर ये मेरा अगला सवाल था भी कि जिस तरह से रॉ मटेरियल प्राइसेस का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, रेवेन्यू मार्जिन आउटलुक उस हिसाब से फिर इस वित्त वर्ष के लिए क्या होगा? One would have thought that if the demand is so very huge, the one will be able to increase the prices and therefore the margin should go up. I do not think so at all because the ocean freight and the container charges have gone up significantly. It was an unplanned one. Copper prices are going up and installation and other expenses, you are actually mobilizing much more talented team in order to cope with this. So therefore, margin is remaining stable. The you know one the I have been saying this. This industry probably will settle down to an operating margin of around. If you are doing extremely well, you should look at anywhere between 8 to 9%. Some point of a time, the hope was that it could be 10 to 12%. It is not so. It is between 8 and 9% because there is enough number of players and everyone is willing to gain market share at this point of time. सर ज़रा बताइए कि इस समय ब्लू स्टार का मार्केट शेयर एसी सेगमेंट में किस लेवल पर है और कोई नए लॉन्चेस की तैयारी हो रही है? The market share will be between 13.75% and 14%. We have to see the quarter one, how we will perform there. Our goal, as you're aware, is to reach 15% market share in FY25. That's what we are working towards. Let us see. Um, the uh, the market share alone is not our goal. So very clearly, as we have demonstrated, you have to grow profitably.
At the same time, you have to ensure that the operating, the customer experience is the customer experience that is delivered is of highest order, and we will continue to pursue that. Now, as far as the new products are concerned, it was launched only in the month of January for the season. We will look at a new range of products post September. It will be for the next year now. ये बताइए कि B2B सेगमेंट में कमर्शियल रेफ्रिजरेशन की कैसी डिमांड है, किस प्रकार की ग्रोथ आप देख रहे हैं? But as you can imagine, the summer season drives the demand for the deep freezers. There again, the growth is in excess of around 30%. The ice cream and the processed food are the segments, especially this time, the election and the IPL and extreme heat conditions. You may be knowing better. All the ice cream companies must have done extremely well. Therefore, we have done extremely well in the deep freezer and cold storage segment. In any case, commercial refrigeration is a segment that is underpenetrated in the country. As the consumption for the processed food grows, as the modern retail evolves, as the pharma value chain is attracting investments, we are clear beneficiaries. And moreover, we are a very big player in the QSR segment and the food delivery chains as well. We have been growing at the rate of around 25%. I think the same level of growth should be maintained over the years. And in our case, we have been investing substantially in backward integration and manufacturing products that are suitable for Indian conditions as well. And so we are very happy about the जी, commercial refrigeration part as well. ऑलराइट। त्यागराजन सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू। थैंक यू सो मच अपना समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कंपनी की पूरी डिटेल्स दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी के साथ शो को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा ज़ी बिज़नेस के साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।